It's not starting. Yes. Good morning, children. So once again, today we will continue the chapter number 7, experiments with water. And last period we discussed about the things which soluble in water and the things which are floating on the waters. Once again, we will revise it by watching a very small experiment, which I already share you in the Google Classroom. So it's a request to one and all, please just watch it. And as soon as video is over, then I will give you chance to comment on it. So my voice is audible to you. मेरी आवाज आपको आ रही Yes, है? sir. प्लीज आप मुझे Yes, थम्स sir. अप. Yes, Yes, sir. Okay. I hope this is visible to you. Is it visible to you? no, sir. Yes, sir. Okay, now I'm playing Yes, just sir. 1 minute 33 seconds. Floats upwards in the air. Why do certain things float and others Video sink? is pausing and hanging. Floating or sinking depends on the fluid in which it is placed. Density is defined as mass per unit volume. If the object's density is less than the density of the fluid it is put in, the object floats. If the object's density is more than the density of the fluid it is put in, the object sinks. Let us see an experiment with two different solids in two different liquids. For this we need water and glycerine, plastic balls and lemons. Gently set the plastic ball in the water beaker and observe. It floats. Now place the plastic ball in the glycerine beaker. Again, the ball floats. Now try the same with the lemon. First, put it in the beaker of water. It sinks. Next, put it in the glycerine beaker. It floats. From this experiment, we can see that the density of the plastic ball is less than both water and glycerine, but the density of the lemon is more than that of water, but less than that of glycerine. It thus shows us that the density of glycerine is more than that of water. Does your body float or sink in water? It sinks because the body's density is more than water. Yet in the Dead Sea, the body only floats. Can you think why? Yes. So it's very small experiment. Once again, I shown to you. And what does this experiment shows? So I would like to take Sudiksha's comment. Sudiksha, Yes, sir. you understand what the sir said just now? Yes, sir. Come on. The, dens- the density of glycerin is more than the water. Okay, very nice. Good, well tried. Please mute yourself. Yes, Komal. Yes, Komal. What do you understand by this experiment? Sir, I understand that the density of glycerin is more than water. Okay, very good. The density of glycerin liquid is more than water, and because of that, the lemon is floating on it. In the same way, in the same context, we already studied in previous period, density of the water of a Dead Sea is more because of the salt, and that's why people are floating. They don't know how to swim, even though they float. Very good. In the same connection, we will revise the same. Anybody want to share about this density or a floating concept? Would you like to share anything, your ideas, what you read, as I already shared to you? Would you like to say something? Please raise your hand. I will give you a chance. Otherwise, I want to show you the another video, so it will be clear. Last time, 2-3 students already Sir, the discussed these glycerin. questions. So purposely, I'm yes. Come on, Sanvi, continue, beta. Um. Sanvi, yeah, I can hear you. Is the reason also that the glycerine is thicker than the water? That's why it's Yes, you floating. can say, yeah, you can say like this way, though you may not get the clear picture of a density word.
Definitely, what you are saying is absolutely right. The glycerin is thicker than the water. Very good. Very good observation by Sanvi. Yes, Can because I of show the the another video now? density and because of the density Yes. and the power of the thickness of the glycerine, the lemon is floating in the glycerine. Yes, yes, absolutely right. So your conclusion, your observation is absolutely right. Very nice. Keep observing the thing carefully. Very nice to hear the answer from you. Now I'm presenting the another video. Please, when I'm showing you the video, please observe it carefully and comment what you understand, what you like to discuss. I hope once again the video is visible. Please do not interrupt in between. This is also Yes, sir. just 5 minutes only. I will take it fast. Yes, sir. I hope it is okay. Please listen it carefully. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Sir, I can't see this. Please keep quiet. Did you see that activity very carefully? There were certain objects that sink and there were certain objects that float. Let's make a list of things that float and let's list of things that sunk inside. Alright, so So my we voice is usually think that audible. My voice is audible. So I don't want to waste the time. So we all Yes, already sir. done this experiment. Yes. Please listen. You saw in the picture and the video what are the objects float on the water and what are the objects sink in the water. Yes, sir. And as I already told you to complete the table in your textbook. That's why I don't want to show you all this again. So I'm going a little bit ahead now. Okay? Please listen. some illustrations. So suppose if I have some water inside a beaker and I have to put inside a square wooden block, okay, a wooden block. And the weight of this wooden block is 5 kgs. So when I put this wooden block inside, it will go in directly inside and sink. So it will come here, it will sink. Just right, sink. Now what exactly happens behind this sinking is, when the wooden block goes inside water, it will occupy some space. So it needs some space to be occupied here. And that much of space which is occupied by water already, it has to be vacant. Okay, this space has to be vacant by water so that the block can accommodate inside. Now that much of water which is present here in the same space has to be displaced. So suppose that is wooden block displaces some amount of water. That is this much amount of water, it is displaced. That means it is taking its place. So the wooden block is taking the place of this much amount of water. So we say it has displaced water. And when we measure the weight of this much of water, it is about 2 kg. So now compare the weight of the wooden block and the displaced water. Which one is more? The weight of the wooden block is more than the weight of the due to which the wooden block sinks.
So this is the whole idea of sinking inside, moving forward. Now what has happened exactly in these cases is, you talk about small pin. When small pin goes inside, this is the bowl, okay, sorry. It has displaced only little amount of water, okay? Only little amount of water. Okay, this much. So the weight of this water is less than the weight of the pin, due to which the pin sink inside. Whereas when we talk about the ceramic bowl there, if we put the ceramic bowl in water, so the bowl is floating, reason because the bowl is taking only some amount of space of the water. Okay, it is displacing some amount. Suppose it has displaced this much of amount of water. So if it has displaced this much of amount of water and we check the weight of this water is suppose 10 kg and the weight of the bowl is 5 kg. So which is more here? Here the weight of the displaced water is more than the weight of the bowl, due to which the bowl floats. The same goes for everything that floats. The amount of water these things have displaced is having more mass, or you can say it is of more weight than the objects, due to which they are floating. I hope you are clear with the reason behind why do things float and why do things sink. So what is the reason behind this? Is the amount of water that is displaced by any object. This water, this displaced water should be more in weight than the object, then only the object will float. If the weight of the object is more than the displaced water, then the object will sink. I hope you are clear with floating and sinking of objects. So I already stopped this. I hope your concept Yes, is clear. I hope your concept is clear, and as I told you in yes, sir. previous period, I will continue as we understand what is soaking and what is sinking. When we understand this, then only we can discuss about the object which float and the object which sink in the water. Now, one more thing I want to share and I want to tell you. Last time we already discussed water is a such solvent which is called as the universal solvent. So many things dissolve in the water, and water is such a solvent which is available in three states. This is called as states of matter. Now we are going little bit the higher version. The states of matter, the water is available in the liquid form, the water is available in the solid form, and water is available in the gaseous form. Just one more minute video I will show you, and so again it will be clear to you. Can I show the Okay, video? sir. Yes, Yes, very sir. small video, very Yes, small video. Yeah, please yes, mute. sir. Yes, sir. Yes, yes, very nice. Sir, I cannot see. Just wait. Yesterday I searched it. No, I'm not getting. Yes, sir. Just 1 minute. Yes, sir. Okay, sir. It's just 2 minute video, and it will be when you observe it, you will remember for a longer days. That's why I want to show you this one. Yes, sir.
Yeah, I got it. Yes, sir. Please wait. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find. I hope it is visible to you all. Separation of dissolved Stop. substances. Yes, sir. Don't start. Water dissolves many Yes, things. sir. When sugar mixes with water, it forms a solution. Here, sugar is a solute and water is the solvent. Evaporation and distillation are the two methods used to separate dissolved substances from water. Evaporation. Soluble substances in water can be separated by heating the water. When all the water gets evaporated, we get the substance. So, the process of separating soluble substances in water by heating is called evaporation. Here, the water is converted into water vapor. Distillation. Distillation is a very good method of purifying water. In this method, we can also collect the water vapor and change it back into water by cooling. For example, take some salt water in a retort. Connect this retort to another flask called condensing flask. When water present in the retort is heated, water vapor is formed and it is collected in the condensing flask where it changes into drops of water. The salt is left behind in the retort. The water collected in the condensing flask is called distilled water. Okay, so I want to stop here. The small experiment is quite enough to understand the water is available in three states. That's in the Yes, sir. solid. Just I shown you a small experiment. Instead of I will speak, now you will speak about the previous experiment, and just I shown you 1.5 minutes. Who would like to speak now? Please raise your hand. If you raise your hand, you will get chance. What you observe and what you understand. Afterward, I have to discuss the CCT questions as well. Yes. Don't hesitate. It be Sir. wrong. Sir, I can't see you. If you keep your camera on, it will be easy to identify you. Sir, Yes. Sanvi Magar. Yes, Sanvi Magar. Yes, Sanvi, please tell me. From this video, from the last video of sinking and floating, from that video, I understand that the sinking and floating depends on the weight of the object which we use, Yes, and very nice. uh, as I told you, the glycerine is thicker, so the lemon will sink, float on the glycerine, and the water is thinner than the glycerine, so it doesn't has power to hold, and the lemon has more weight than the water, so it sinks in it. Yes. And just now, which video you showed us about the water vapor, Hmm.
they showed to connect to containers, and if you put salted water, first you mix the water with salt and put it in it, and you heat it from down. The all salt will come down and like get out from the water, and all salt will come down, and when the water will get heated, all the water vapor will come up, and as the water vapor is a gas, it will pass through in the lower container which they showed, Hmm. and that's what I understand, and the water which comes in lower container is called distilled water. Okay, very nice. Very nicely you presented, Sanvi. Okay, let me tell you one or two sentence. Yeah, she expressed about why the object sink and why the object float. That is totally depends upon the density of the object. The second thing she told that water, when we heat the salty water, that is called as the separation. So we can see the salt in the bottom of that container, and the water vapor, when we heat the water, that water vapor is collected in the collecting pot and it is cooled. You can see in the pictures the water is poured on that container. At the bottom the ice box is there, so that water vapor convert into the water, and that is called as the distilled water. That water is pure water without any mineral. And let me tell you one more thing. The water have two molecules. That is, one is the oxygen and the another is the hydrogen. Oxygen and hydrogen. Well, let me tell you one more thing. Oxygen, one molecule, and hydrogen, two molecules. Then it's become the water. That it will be little bit difficult for you, but you should know it. That's why I'm telling you. Very good. So, Sanvi, you explain it nicely. Now, I would like to give chance to Kasturi. Kasturi, would you like to say something? Don't hesitate. Whatever you understand, you have to express. Very good. Yes, sir. Yes, Kasturi. So I understand that anything can dissolve, just like sugar, salt, these things and etc. can dissolve. And when we Hmm. heat it, and then Hmm. it will be easily dry. And I have to give an example that Hmm. water and oil can't mix Hmm. Water and because coin. Yes. Yes, because yes. water is very um water is very so because oil is silky and water is heavy, so that's why it can't be mixed up. Okay. Sir, can Okay. I, Well tried. Aishwarya? Thank you, sir. One by, yeah, Aishwarya, I saw your message in the chat box. Aishwarya, now please you speak. Aishwarya. Yes, sir. When we heat the water, the Can you on your camera, Kasturi? I want to see you. Kasturi, I'm recording. That's why I want to Yes, see you. Kasturini, that sir. Aishwarya, your camera is working? Yes, sir. Please. Yes, 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 I can see you. Go ahead. When we heat the water goes into cold vapor and Hmm. become a water. Okay, water vapor convert into the water. When we give such conditions that we are pouring the water on that container, or if we give the cool atmosphere, as we can keep the ice near that container, so that water vapor convert into the water easily. Okay, very nice. Now I would like to go ahead about the CCT questions based upon these. Here the questions will be application type, so you have to tell the answers. Let it be wrong, don't worry. What you understand, that you have to tell me. Can I present the CCT questions? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, in Yes, sir. connection with this, yes, please let me speak now.
Thank you. Now I want to show you the link I have attached to you, and it's my humble request, please go through it. Now I want to show you, here is an experiment with water. If you can see this here, a small video is Yes, sir. there. After that, I have attached here some work for you. Please listen carefully. Observe the two pictures given below, compare and write your observation. This work is given for you as a homework. Now here you can see something I don't want to discuss here. You have to observe and just write 5 lines on it. This is related to our Yes, sir. topic. The second one is observe the following pictures and write your observation. We already discussed in the previous period about the Dandi March. Observe the following And picture and if write you your read, please let me conclude. So this is about the Dandi March. Afterward, this is about the Dead Sea. See, whatever is mentioned in the textbook, this is for just introductory part. I request you to read something more about the Dead Sea and write your own sentences. So these most of the questions are long questions. Please try to write in your own word. In next period, I will ask you randomly 4 to 5 students. Observe the following pictures and write the names of the process involved, and also write the salt is prepared by this process. As we already discussed last time, how the salt is prepared, or you can prepare, you can write the preparation of a tea method with the step by step. Everybody know how to make the tea. And the last is experiment. Just I discuss. Water is a universal solvent because it can dissolve many substances in it. So many substances can dissolve and decompose in the water. Check by the experimenting the following things and color the glass with the blue water on which the soluble thing is written. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है. जो चीज पानी में घुल जाती है, डिजॉल्व हो Yes. जाती है, उसको आपको क्या करना है, ब्लू वाटर से क्या करना है, कलर करना है. बट आप ये ग्लास अपने नोटबुक में खुद बना सकते हैं और उसके नीचे ये स्पेलिंग लिख सकते हैं. ग्लास के अंदर स्पेलिंग मत लिखना क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देगा फिर. ये वर्क मैंने आपको आज दिया है. आप इसमें से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, लेकिन ग्लास वाला क्वेश्चन आपको सबको करना है. फिर मैं बता रहा हूँ, Yes, एक, sir. 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये 4 क्वेश्चन में से 2 करो और लास्ट वाला आपको सबको करना है. और एंटायर वर्क शुड बी फिनिश विद इन 2 पेज. सर मैं 4 पेज नहीं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, 2 पेज ओनली आई एम आस्किंग यू. सो दिस वर्क इज गिवन टू यू. नाउ द नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो लिंक मैं वीडियो आपको बता रहा था, ये भी आपने देखा होगा. और सॉल्वेंट के बारे में अभी जस्ट आपने देखा, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात जो है. Yes, sir. 1 minute मैं इसको. Can you please repeat the homework? Yes, I will repeat it, and already instructions is already given in the Google Classroom. Please watch this. Sinking objects. Sir. Liquids exert an upward force called upthrust or the buoyant force. Objects that sink are also partially supported by the upward thrust of water. The weight of the object acts downwards, while the upthrust of water acts upwards. As a result of this, when objects are immersed in water, they seem to lose part of their weight and weigh less than their normal weight in air. The weight of an object in water is called apparent weight. The difference between the actual weight and apparent weight of an object is equal to the weight of the water displaced by it. The weight of the water pushed aside by an object is equal
to the apparent loss of weight of the object. This fact was first discovered by the Greek scientist Archimedes and is called Archimedes' principle. Okay, yeah, children. Why I shown to you? Let me tell you first. क्योंकि आगे जाके आप इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, मुझे बताते भी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आप 7-8 क्लास में जाके पढ़ोगे तो उनके लिए मैंने बताया। सबके लिए समझ में आएगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। इफ यू रीड देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नहीं समझ में आता है लेकिन यू शुड नो एटलीस्ट द साइंटिस्ट नेम। आपको कम से कम क्या पता होना चाहिए, साइंटिस्ट नेम पता होना चाहिए। कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, आर्किमिडीज ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट किया था वाटर के बारे में जो ऑब्जेक्ट सिंक होता है या वो। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी नहीं आता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ आपको मैं और एक बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये वीडियो दिखाई दे रहा है 6 मिनट का। Yes, sir. आपको मैं आवाज बंद कर देता हूँ इसकी, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आप मोबाइल पे लगाएंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक के बारे में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इसमें डिस्कशंस किया गया है। इफ यू लाइक दिस यू कैन आल्सो राइट दिस, बट नॉट नेसेसरी। पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, याद रखना है। I request you others, you can see the experiment with water, fill in the blanks, you know it. पहले आप अपने मन से तैयारी करो। A needle dash in water, whether it is sink or float, you know it now. मैं आगे जा रहा हूँ, देखो मैं आपको सब नहीं बता। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। Now there will be a true and false question. If you listen this 6 minute video, तो आपको पूरे चैप्टर की समरी आपको समझ में आ जाएगी। So here the objective MCQ questions also there, and then later on what will happen. If you see the last question, if we put a raw egg in a glass filled with ordinary water, what will happen? पहले आप इमेजिन करो, फिर आप अपना आंसर डिसाइड करो। उसके बाद में आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, यू ट्राई। द एग विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ये आंसर्स तो मैंने दिया है, बट आपको पहले इमेजिन करना है। जब आपका क्वेश्चन आएगा उससे पहले पॉज देना है, अपना गेस करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करो। यू आर द बेस्ट टीचर, आप अपने लेवल पे टीचर बनने वाले यहाँ पे। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, आंसर इन ब्रीफली। व्हाई अ पर्सन विल कंटिन्यू टू फ्लोट इन द डेड सी इवन इफ ही डज नॉट नो स्विमिंग, as we already discussed. This 6 minute video will help you to understand the chapter in a better way. I think it is clear to you all कि देखो ये 6 मिनट एंड 19 सेकंड्स का वीडियो जो है आपको पूरे चैप्टर की क्या करेगा, रिवीजन करेगा। और मैंने ये जो क्वेश्चंस दिया है ऑलरेडी आपने देख लिया है कि मैंने कौन सा काम आपको होमवर्क के लिए दिया है। अब आता है मैं सीसीटी क्वेश्चंस के ऊपर। Yes, sir. यस प्लीज। सर मुझे एक डाउट है। डाउट सेशन लास्ट में ना बेटा, मैं चांस देता हूँ ना आपको। हाँ। यस, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस सीसीटी क्वेश्चंस। इसमें से जाना पड़ेगा मुझे। आप देख लीजिए, मैं एक साथ इस तरह से कैसे करता हूं, तो आपको भी धीरे धीरे सीखना है। सब लोग एक दिन में नहीं सीखते, है ना। सब लोग एक दिन में नहीं सीखते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। सर आपकी प्रेजेंटिंग नहीं दिख रही है। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। आई एम प्रेजेंटिंग नाउ एंड दीज आर द सीसीटी क्वेश्चंस। ये आपको पेपर में इसी तरह से पूछा जाएगा। हो सकता है कि सिलेबस से नहीं हो। आई होप प्रेजेंटिंग इज विजिबल नाउ। यस सर। यस, आई एम जस्ट ओपनिंग। और मैंने लास्ट टाइम सारे चैप्टर के सीसीटीज आपसे शेयर किए थे। मैंने कहा था कि रिवीजन के समय में मैंने लिया था और बोला था कि आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। So I'm just opening the 5th class. I will take 5 questions from it.
Can you see these chapters now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, just wait. सर आप थोड़ा बिग कीजिए ना स्क्रीन. हाँ मैं बड़ा भी करता हूँ, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, लेट मी ओपन फर्स्ट. इट्स टेक टाइम. नहीं आपको बड़ा कर दूंगा मैं, आप चिंता मत करो. ये जो चैप्टर ढूंढ रहा हूँ मैं, हमारा 7 चैप्टर, 16, 18, 20, 21, वो सब मिक्सअप है इसमें. एक्सपेरिमेंट विथ वाटर 9 एंड 7 वाला कहाँ है? हाँ यस आ गया. आई थिंक सो इट इज विजिबल टू यू ऑल. Yes, sir. अभी मैं थोड़ा सा बड़ा भी करूंगा और बड़ा करूंगा, डोंट वरी. ओके तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ. ओके इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है. Yes, sir. Now I am reading and you write the answer in the chat box. This is the set 7 sun. ये तो सीड्स एंड सीड वाला आ गया है. मैंने उसका लिया था क्या? सीड्स वाला लिया था मैंने डिवीजन में. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ये सीड्स वाला सीड्स एंड सीड्स क्यों आ रहा है? नो सर आपने नहीं लिया था. Yes, sir. आपने लिया था. हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने लिया था. मुझे Yes, sir. एंड सीड्स, मुझे ये चैप्टर चाहिए. सर इधर चैट बॉक्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम. हाँ अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और समय की वजह से मैं खुद रीड कर रहा हूँ. ऑन ए हॉट समर डे we take 2 similar glasses P and Q and wrap a thick dry cloth tightly around the glass. Okay, and we then pour ice cold water into the glass. After a minute, if we touch the outer part of the cloth covering glass P and the outer surface of the Q, which of them will be wet? This is the story of a glass, summer season, cloth. Now if you read this, now can you tell me your answer? Both of them? Only the outer part of the cloth covering glass P, only the outer surface of the glass Q, or neither of Option them? C. Okay. अभी ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा है, आपको मैं भेज देता हूँ, आप रीड कर लेना ताकि इसको समझने में आपको टाइम लगेगा. विल डिस्कस. अभी ये भी क्वेश्चंस बड़ा है, मैं छोटा क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ ताकि आपको दिखाई दे. Some solids directly change state and become gases. कुछ ऐसे सॉलिड चीज होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं, जलाते हैं तो उसका डायरेक्टली गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता है, विदाउट फर्स्ट बिकमिंग लिक्विड्स. दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. इसको सब्लिमेशन बोलते हैं. विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? अब यहाँ पे सब्लिमेशन आप जानते हैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा है. द स्मेल फ्रॉम द परफ्यूम in a bottle spread across the entire room. An ice cube is self in the hot sun. Nothing remains after fuse. When water is boiled, it changes to steam. Mouth ball used to keep insects disappear in few days. Which is the correct? जो solid चीज है डायरेक्टली वो गैस बन जाती है, ऐसी कौन सा आंसर सही है? D. D is the correct answer. Very good. किसने बताया? D. ओके तो मैं आपको देखो आपके सामने मैं ये जो सीसीटी क्वेश्चन थे मैं आपको आपके क्लास में भेज रहा हूँ. आप उसको रीड करो क्योंकि इसको टाइम लगता है रीड करने के लिए. हम अगले पीरियड में भी डिस्कस कर सकते हैं. सर मेरे फोन में मैंने अभी नया गूगल मीट डाउनलोड किया है तो चैट बॉक्स नहीं है तो मुझे कोई सेटिंग्स में दिक्कत नहीं जाके है, वो कोई करना दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. तो मैंने ये सीसीटी क्वेश्चन जो इस चैप्टर के आपको मैंने भेज दिए. वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है. नाउ मैंने होमवर्क समझाया, मैंने क्लास बताया, मैंने डिस्कशन कर दिया और इस चैप्टर को हम अगले पीरियड में डिस्कशन, सीसीटी क्वेश्चंस
एंड लाइट कंडक्ट कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। नेक्स्ट पीरियड में मैं सीसीटी क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा, लैट क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, दे दूंगा लिंक, और ये जो सीसीटी क्वेश्चन आप रीड करेंगे, जो वीडियोस भेजा है उसके क्वेश्चन आंसर आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डाउट लगता है तो हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। जिसको बात मेरी सर समझ में आ गई वो क्लास छोड़ देंगे, जिसको सर डाउट है वो वेट सर एक करेंगे और हाथ ऊपर करेंगे। सर नहीं सृष्टि पाटिल, ये तो गलत है, मेरी आप बात नहीं मान रही हो आप। सृष्टि पाटिल, बाय मैं बाय सर। मैं आपका क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूं, बट लेट्स बाय ऑर्डर थैंक यू एंड यू प्लीज बाय वेट। सर, हैव अ नाइस डे। नो बाय, बाय नो बाय, जाने दो बाकी बच्चों को। या कार्तिक बेटा क्वेश्चन पूछो। कार्तिक, सर हाँ पूछो तो। ग्लिसरीन का मतलब क्या होता है? ग्लिसरीन एक लिक्विड है, जैसे आपको पेट्रोल डीजल इस तरह का जो है, ये ग्लिसरीन आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये आपके जब मुंह में छाले आ जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। ग्लिसरीन की जो डेंसिटी पानी से थोड़ी सी गाढ़ी होती है, दूध जैसे होता है वैसे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कार्तिक। एक लिक्विड है, टर्पेंटाइन लिक्विड है, पेट्रोल डीजल ऐसे इस तरह का एक लिक्विड है। ठीक है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। और जिसका क्वेश्चन है प्लीज आप फिंगर बताइए, तभी मैं आपको चांस दूंगा। मुझे सानवी का दिखाई दे रहा है, बस सानवी सर प्लीज। जब एक एक्सपेरिमेंट है वाटर के साथ, तो वो एक टाइप ऑफ स्पाइस होता है, मसाला होता है एक, जो हम खाने में यूज करते हैं। जब हम वाटर में उसको क्रश करके से स्प्रेड करके डालने के बाद जब हमारे हाथ पे सोप लेते हैं और उस पे टच करते हैं तो वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं। तो वो ऐसे क्यों होता है? ओके, कौन सा अभी आइटम उस किचन में क्या आइटम है? आप कोई सोडा के बारे में बात कर रही है, कोई नहीं, ऑयल एक के बारे में? स्पाइस है, एक स्पाइस है वो एक ऐसे बॉल जैसे होता है। उसको क्रश करके अगर हम वाटर में डालेंगे और सोप ऐसे, सोप को हाथ लगा के उधर ऐसे वाटर में हाथ लगाएंगे तो सब वो दूर हो जाएगा ऐसे। ओके, तो उसकी डेंसिटी जो हो कम होती है। अब जो ऑब्जेक्ट के बारे में आप बताओगी तो फिर मैं बता पाऊंगा। कौन सा ऑब्जेक्ट बताओगी, आपको पता है? नहीं, मैं भूल गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी याद करके। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ब्लैक चलो। पेपर, ब्लैक पेपर। हाँ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर जो है वो बहुत ही स्पाइसी होता है। आपने कभी खाया होगा खिचड़ी में वगैरह, तो ये ब्लैक पेपर हाँ, इतना स्पाइसी होता है ना। तो इवन आप देखो दूध नीचे गिरा है और वहां पे कोई सॉलिड चीज आप डालेंगे उसके ऊपर, तो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है वो, अब्जॉर्ब करता है। सॉलिड चीज है, वाटर को वो अब्जॉर्ब करता है वो। और और जब पेट्रोल में जब वाटर मिक्स होता है तब उसका हाँ क्या बिल्कुल, होता बहुत है अच्छा मतलब? क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको रिजर्व रखा है। और हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे पेट्रोल और डीजल। लेकिन क्या होता है बेटा, ये जो एक्टिविटी पेट्रोल के साथ हम घर में भी नहीं कर सकते या ना स्कूल में कर सकते, है ना। लेकिन आप पेट्रोल और ऑयल, पेट्रोल या मिल्क और ऑयल ऐसे मिक्स करके आप देख सकते हैं, अदर्स लिक्विड, बट पेट्रोल आपको बिल्कुल खेलना नहीं है। यू कैन सी कि पेट्रोल जो जैसे हम बाहर ट्रे में रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है। उसका क्या होता है, गैसेस में चला जाता है। इट इज वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल, ये अति ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ सकता है। तो इसलिए आपने देखा लेबोरेटरीज में, लैब में साइंटिस्ट लोग एप्रॉन पहनते हैं, शूज पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। तो ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा, जैसे आज बताए ना वैसे बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन। उसका रिएक्शन क्या होता है जब हम पेट्रोल और वाटर को मिक्स करते हैं? वो रेनबो रेनबो जैसे एक किसी अभी आप देखेंगे कि कुछ पेट्रोल में भी वाटर मिक्सअप होता है, केरोसिन मिक्सअप होता है, डीजल भी मिक्सअप होता है। आप देखेंगे कि लेयर आप देखेंगे, है ना। एक जो है, जो ऑयल है, यदि हमारा एडिबल ऑयल है तो वो ऊपर तैरेगा, है ना, और हमारा वाटर जो नीचे रहेगा, है ना। लेकिन हमने कभी पेट्रोल का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है क्योंकि इट इज वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल। वो कलरफुल दिखाई देगा, बॉटल में लेके देख सकते हो।
ये और साक्षी। हाँ और हम प्लेट, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। प्लेट में कैंडल रखना है और हाँ वाटर ऐसे पूरा प्लेट में डाल के उसके ऊपर कैंडल रखना है और कैंडल को लाइट करके ग्लास उसके ऊपर देना है। हाँ, तो दिस फिर वो एक्सपेरिमेंट सब, आई नो, दिस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन। ये हमारे आने वाले चैप्टर में आएगा शायद, अगले वाले और भी आओगे चैप्टर हाँ से, तो दैट टाइम वी विल डू दिस। एंड ऐसे जो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं तो मैं आपको चांस दूंगा करने के लिए। ओके, नाइस हाँ। क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन बाय सानवी मगर। तो मैं अभी रीड और कोई करूँ क्या? पूछना चाहता है? अदर स्टूडेंट्स? Sir, I have doubt. हाँ यस, पूछो। Sir, a heavy boat floats and a needle will sink. Why does this happen? नीडल हैव मोर डेंसिटी। नीडल को जो है डेंसिटी, इट्स अ मेटल, इट्स कम अंडर द मेटल, उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो सिंक। इसलिए तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट बताया आपको पहले। उसमें की हो, इवन छोटा सा कॉइन हो, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं कि जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो